The association carries out, promotes, and coordinates philanthropic, educational, and volunteer activities in the communities from the states of Bihar and Jharkhand. The association promotes a common forum for the people of Bihar and Jharkhand to exchange views affecting their social life. It also promotes the general welfare of the Indian American community by providing scholarships, helping financially disadvantaged and basic human needs, while also promoting the cultural heritage of the region by hosting several events. On that, recently a summer picnic event was brought together by the association's members, well-wishers, and the greater community. The event celebrated the contributions and progress of the Bihar-Jharkhand Association of North America and their achievements. Here are some highlights. यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार और झारखंड के लोग जो अमेरिका में हैं, सब एक परिवार जैसा वातावरण है। सभी एक दूसरे में इतना ज़्यादा लव एंड रेस्पेक्ट है और सभी एक दूसरे की मदद करते हैं अपने परिवार की तरह। और इस पेंडेमिक के समय में हम लोगों ने बिहार और झारखंड में काफ़ी रिलीफ वर्क भी किया है। 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा, 2 एम्बुलेंस भेजा और टेलीमेडिसिन से वहाँ के कोविड मरीजों की सहायता की। तो ये सब बजाना मेंबर्स के सहयोग से होता आया है और आगे भी अगर इनका सहयोग मिलता रहे, ऐसे पूरा विश्वास है, तो हम लोग और भी आगे काम करते रहेंगे। Bajana is one of the most prominent and one of the most active community organizations here in the US. Their contribution, especially during the pandemic, has been really admirable. People have got together and have donated generously to aid efforts within India, especially within Bihar and Jharkhand, under the leadership of Dr. Avinash Gupta, President of Bajana. The team has done tremendous work. It's good to see the big turnout. More than 400 people join our Bajana picnic, and as you can see, everyone is having good time. Lots of food, right from the chicken to mutton to paneer to lots of different food options you have. And looking forward for an awesome event this year. We are going to have 2 in-person events. One is going to be Chhath and Diwali. So make sure if you miss this event, in next 2 events, join us. And if you miss this year, looking forward all of you to join our event next year. So thank you very much everyone for joining this event. Today you will be delighted to know that among us, one and only one, those who have founded this beautiful organization, and we cherish today that how come our seniors who failed to have such a platform, who from there everyone get connected. And among us today we have our Ranjit uncle, who is the pillar of the Bajana, and we want to listen from him his words and his visions for the Bajana. Uncle. थैंक यू आलोक। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 1974 में जब हम लोग नए थे अमेरिका में, हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग अकेले हैं और घर की याद बहुत ही आती थी। पटना की बात याद आती थी, रांची की बात याद आती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें और लोग आएँ। और तब से 1974 से और आज तक देखिए कि इतने लोग हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं आलोक और जितने मेंबर हैं, डॉक्टर गुप्ता जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अभी इतने यंग लेडीज़ एंड चिल्ड्रन सब ग्रो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बिहार और झारखंड एसोसिएशन का ग्रुप इतना बड़ा हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच हमें बुलाने के लिए। आई एम ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट एंड आई विल ऑलवेज बी।
थैंक यू। पैंडमिक के बाद हम वापस से एक बार फिर से मिल पाए हैं और बजाना पिकनिक हर साल ऑर्गेनाइज होता है, इस बार 1 साल के गैप के बाद हुआ है, बट वी हैव ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स और काफ़ी लोग आए हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म वेर इन many new people who come from India, they come connect with others, they get a lot of helps in terms of connecting to the people who are already here. It is very nice seeing so many of us here without mask, not because everybody is vaccinated. Definitely we are still, if we have to follow the guidelines, we will definitely. We also have one upcoming event which is 75th in India Independence Day, and here is the flyer I'm still holding and distributing, letting everybody know that we are going to do a biggest ever flag hoisting at Times Square. It is a free event, so please join. You can check the website of FIA and you have all the details given there. Now we will distribute certificate to all the participants and all the volunteers who really did a great job in conducting this summer camp. All these are high school volunteers. And this is what it is. These younger kids will become high school student again. So they are going to volunteer in future. To